नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते शिखा नमस्ते जी। सर। नमस्ते सर। तो जो आज का सेशन है, शिखा जी लेने वाली है और कुछ शकुन शास्त्र के ऊपर हमें कुछ पॉइंट्स वो बताने वाले हैं। और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए। तो प्लीज शिखा जी आप स्टार्ट बताएं आप प्लीज। Thank you, sir. Vastu Shastra, in Vastu, all the people all the time keep on talking about many things like northeast damage, toilet in the northeast, then you'll do this. The Brahmasthana is spoiled. There is a cut in the southeast to financial problems. But they all forget there is a lot more to Vastu Shastra. Like Murata, the day you'll need to start the construction. And there are important days that you can, like you have to go through the whole of the Murata to decide at least 5 different Muratas for 5 different things. This I'll take it on another day. Today, we'll just do a 2 or 3 minute like the important shakuns that we get the day we start the construction. Simple topic. Uh, so the day we start, Shakun for starting home construction. If you see a bird in the southern direction, it flies off and comes and sits back in its own position, then it is a very, very auspicious shot. Any bird, especially if you see the Durga bird. This bird I have put is called as a Durga bird. It is also called as आई थिंक शनि का बर्ड है ये. एक पर्टिकुलर नाम नीलकंठन. नीलकंठ। हाँ, ये तो बहुत रेयर है ना ये पक्षी तो। बहुत रेयर बहुत है. रेयर पक्षी बट है। when the बट यू सेड शास्त्र बट यू सेड कि कोई सा भी पक्षी हो। बट इन द शास्त्रास लाइक दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस बर्ड. तो ठीक। इनका एक अलग से मेंशन है कि when the दुर्गा, if you spot a दुर्गा पक्षी very rare, then it becomes the most auspicious. That also in the south of your construction, wherever whichever is the south side of your construction, that. Or you hear, also hear just a crow cawing, that also is considered very, very auspicious. Then the construction that we the bird, if it flies off and comes back to the same position and sits very quietly, हम्म। does not become angry or does not start crying, then that in a peaceful way, that again denotes a very, very auspicious show. Most of the day after, Bharat sir, my first teacher, he always used to say, listen to the nature, listen to the nature. You will get so many clues of what is going to happen next. So I think this is an important point. Spotting a mongoose, sparrow, is also Sarvasya. That also is a giver of a very, very auspicious time to start the construction. Even a tortoise or a hare or a pig, iguana pig especially. But at, if at the same time you see some monkeys or bears or also hear them, their sounds, they are very, very auspicious. So these are the some Shakun Shastras given at the time of starting the home construction. मंगूस से Starting. मतलब ये हुआ, मंगूस से मतलब हुआ आपका नेवला जिसे हम लोग बोला जाता है। हाँ, हाँ, right. तो वो तो हमेशा शुभ होता है। यस। Yes. So स्पैरो जो है, स्पैरो कौन सा बर्ड हुआ अपना? sparrow चिड़िया, चिड़िया जो हो गई। तो कुल सिंपल मिलाकर सी के ये चिड़िया. होगा कि अगर कोई सा भी चिड़िया साउथ डायरेक्शन में आए तो वो नहीं. शुभ है, और अगर नीलकंठ पक्षी हो तो वो ज्यादा शुभ जी. है। इवन क्रो. और यदि यहाँ पर कौवा आ रहा है और वो स्वीटली बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। लेकिन अगर वो काव काव ज्यादा कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉब्लमेटिक हाँ, sometimes the birds are very angry. Sometimes they have spotted some killing which they don't like, and suddenly you see so many birds, or so है। many of them going at one time and start screeching. Like that noise we should not. वो नहीं हम
बहुत इजी है। बहुत ही। और ये मोस्टली तो आई एम लिविंग इन सच अ प्लेस वेयर देयर आर प्लेंटी ऑफ बर्ड्स अराउंड। एवरी डे मॉर्निंग आई जी। जस्ट सी, इफ आई सी अ पैरट फर्स्ट, ओह दैट्स अ गुड डे फॉर मी। नहीं, खास बात यही है ना कि बर्ड्स के लिए अच्छा बताया गया ना, सभी बर्ड्स के लिए तो राइट। ऑलमोस्ट। खाली मंकीज के लिए इन्होंने कहा है कि मंकीज जो हैं आपके बंदर जो monkeys हैं और उनको लेकर bears, के, they बियर, are बियर इतने inauspicious. होते ही नहीं है आजकल, मिलते नहीं। नहीं है। मंकीज तो ऑलमोस्ट आ जाते हैं, सब जगह है मंकीज वगैरह का। करेक्ट। तो ठीक है। सो देखिए, दुर्गा पक्षी के लिए प्लीज आप बताएं वापस से, दुर्गा पक्षी कौन सा हुआ? ये जो पिक्चर है एग्जैक्टली दिस इज द दुर्गा पक्षी। अच्छा, नीलकंठ जो आप बता हाँ, रहे हैं, नीलकंठ ये पक्षी बहुत कम मिलता है, बहुत कम है, बहुत रेयर। रेयर है। बट जब ये शास्त्रस लिखे गए तब तो ये प्लेंटी थे। जी। एंड ये दिखाई देते थे अक्सर, इसके लिए इनका मेंशन बहुत ज्यादा है। आजकल तो रेयरली सीन, आई डोंट थिंक आई हैव सीन दिस बर्ड मे बी इन अ, जहाँ पे नहीं, जो नजर आ जूस जाते हैं, रहते कभी कभी नजर आते हैं, बहुत रेयर नजर आते हैं, और स्पेसिफिक टाइम पे नजर आते हैं। इसका हैं। स्पेसिफिक अच्छा। टाइम भी है नीलकंठ पक्षी ओके। का। तो So ठीक है। that's it. The birds play a very important role. They try to give you hints. Like when we were young, my granny always used to say, if a crow comes and paws at your window or door, understand that there is going to be someone coming. There is going to be some guest in your जी। house. They announce that someone is coming to your place. So she would prepare more food. जी। And that always used to happen. So if you just sit and listen to the birds, to the nature, what the nature is trying to tell you, it becomes the most important thing. That's थैंक यू सो मच। thank you, thank थैंक you यू so सो much. मच।